How are you student? Now today we will start class 10th subject maths. चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक्सरसाइज इज 5.3. 5.3 एक्सरसाइज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उससे हम स्टार्ट आज करेंगे. एंड दैट चैप्टर नाउ मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम. अभी तक हमने जो किए हैं वो क्या निकाले? एपी निकाले हैं या एन टर्म निकाला है. बट हियर इज द क्वेश्चन इज सम. तो सम का फॉर्मूला हम आज सॉल्व करेंगे. सम के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे. हाउ वी कैन सॉल्व? फर्स्ट यू नो वेरी वेल दैट हमें पता है कि ए. व्हाट इज ए? ए आपको पता है ए इज फर्स्ट टर्म. ए इज फर्स्ट टर्म जो आपने पुराने एक्सरसाइज में किए हैं. डी इज कॉमन डिफरेंस. डी इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. डी इज कॉमन डिफरेंस एंड विच वी कैन डिटरमाइन a2 minus a1 or a3 minus a2. And you have listen an is the nth term. Nth term or we say last term. Nth term or last term. And formula of an का जो formula है a plus n minus 1 into d. And you know what is a is first term, n is the number of term, d is common difference. Here simply Sn means sum of first and term पहली and term का sum, first and terms का sum of first and term. And now formula of this one, n upon में 2a plus n minus 1 into d. And second formula, here are the two formula of Sn. First one, n by 2 2a plus n minus 1 into d, and third one is n by 2. This will be a plus l. A plus l. What is l? Last term. Here is the last term, and which is equal to a plus n minus 1 into d. This l is last term. Last term. It is the last term, which is equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d. This is the l. And now इसका मतलब Sn निकालने के लिए, to find Sn we need n, we need a, we need l. Or by second method formula, we need n, we need a, we need d. Here is the AP. Here is AP is given to us. Here is the solution. AP is given to us. And now first, what is this? This is A. This is A mean first term. A1 is equal to 2 and A2, this is the second term. This is the first term, this is second term, this is third term, and this is number of terms. Means we have to find out the sum of how many term? To first 10 term. Here is A1. हमारे को 10 टर्म का सम निकालना है. तो A1 is 2, A2 is 7. From here, what we can find out? D. D is equal to A2 minus A1. And what is A2? Is 7. What is A1? 2. 7 minus 2 is equal to 5. It means D is equal to 5. D मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया. देखो. D is equal to 5. This is D. D is equal to 5. And a1 means a is 2, and now n is the total number of turn, which is 10. And now we have to find out Sn mean n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. We have to find out this one. और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे s. n की जगह what is the value of n? 10 is equal to n की जगह 10 upon 2, फिर ब्रैकेट 2. what is this? a की जगह 2 आ जाएगा. we will place 2 plus n की जगह 10 minus 1 into d की जगह 5, d 5. and now solve it. s 10 is equal to 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आ गया. और there is 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस 10 minus 1 9 into में 5 ब्रैकेट क्लोज. and now this is 5 bracket 4 plus
here is 9 or ये 5, 9 5s are 45, and now 5 into, and 45 plus 9, 49, and now this is the sum of first and term. Now tell me the answer. This is your first question. 245, ये हमारा आंसर है. इज इट क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ए, एंड देन डी, एंड देन एस एन. एंड नाउ सिमिलरली मूव टू क्वेश्चन नंबर second part. First question, question number first, second part. And again, you know very well, what is this? A1. A1 is equal to 37 minus A2 is equal to minus 33. क्या निकालेंगे? D निकालेंगे. What is D? Find D first. D, A2 minus A1. निकालिए. What is D? निकालिए. Do yourself first. D, find D. A2 minus 33 minus A1 minus 37. ये minus, this will make plus. So this will be minus 33 plus 34, 37, sorry, 37, and minus 34 plus 37, तो 4 आ जाएगा. D is equal to 4. This is minus 33 plus 37 is equal to 4. So D is equal to 4. Here is D and this is A. This is A. ये मेरे पास A है, ये D है. And now what is N? N, where is N? A1, A2, A3, and here is number of term. Number of term N is equal to 12. And now simply put right formula, N upon 2 bracket 2A plus N minus 1 into D. And now as N is 12 is equal to, what is N? 12 upon 2, what is 2? A, what is A? What is A? A is minus 37 plus N. What is N? N is 12. N is 12. And into D, sorry, 12 minus 1. N is 12 minus 1. Here is 12, N is 12, and then minus 1. Here is 12 minus 1 into D. What is D? D is equal to 4. D is equal to 4. And D की जगह 4 रख दिया, N की जगह 12, 2 और A 37. This is A 37. Here is 2 1 are 2. Here is 6. So S 12 is equal to, what is left? 6. Bracket 2 multiply 37 minus, that will be 74, plus 12 minus 1, 11 into 4. And now your answer is S12. S12 is equal to 6 minus 74 plus, here is 44. 44 minus 74 plus 44. 6 minus 74 plus 44 minus 30. Minus 30 into 6. S12 is equal to minus 180. And this is S12. And this is the second part. And after that we have to move to next question. Question number, this is the fourth part of question number 1. Question number 1, fourth part. And the third you do yourself solution, because both are same. Here is A. A1 is equal to 1 upon में 15. A2 is equal to 1 upon में 12. Find D. Now you have to find D fast. D निकालिए. A2 minus A1. What is A2? 1 by 12. This is A2 1 by 12 minus A1. ये रहा A1 1 by 15. क्या लेंगे दोनों का? LCM. तो D is equal to 12 और 15 का LCM. LCM of 12 and 15. क्या लेंगे? ऐसे लेंगे 15 और 12. Here is, it is divisible by 2. 3 is common. 3 is common. 3 5s are 3 4s are. And there is a no common. Now all are prime number. It is not prime number. So here we have to 2. Here is 5 and this is 2.
टू फाइव जा 10, 10 टू जा 20, 20 को 3 से 60, तो एलसीएम इज 60, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 आएगा, माइनस 60 को 50 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से 4 आएगा, तो 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 1 अपॉन में 60, दिस इज डी, ये डी आ गया। एंड हेयर इज ए, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एन, एन हमें पता लगाना है कहाँ है, एन इज 11, एन इज 11, अब निकालना क्या है एस एन, व्हाट इज एस एन, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, एस एन की जगह 11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a, व्हाट इज a इज हेयर a 1 बाई 15, a की जगह 1 बाई 15 इंटू में 1 अपॉन में 15 प्लस n इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 11, n इज 11 माइनस 1, व्हाट इज d इज 1 बाई 60, ये रहा d इज इक्वल टू 1 बाई 60, एंड नाउ सॉल्व इट, s11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 को 1 से 2 1 जा 2 अपॉन में 15 and plus here is 11 minus 1 10 into 1 by 60, and 0 will cut, and now what is left s11 is equal to 11 upon 2, here is answer 2 by 15 plus 1 by 6, and now solve it, find the answer of it, निकालिए, what is the answer, solve it by taking LCM, इसका LCM लीजिए, what is LCM 15 और 6 का LCM, here is 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 5 2 जा 10, देखो ना 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो LCM 5 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 30, तीनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, LCM इज 30, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 13 इज डिवाइडेड बाई 15, क्वोशंट इज 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, 5, 5 को 1 से 5 1 जा 5, here is s11 is equal to 11 upon 2, 5 plus 4 9, 9 upon में 30, and we have to multiply, now this will be cut, 3 3 जा 9, 3 10, what is left 3 और 11, देखो दोनों को मल्टीप्लाई 3 और 11 33 अपॉन में 10 को 2 से 20, it is your answer 33 upon में 20, this is the third part, and now move to question number, this is the question number second, this is the question number second and the first part, find the sum, पुराने क्वेश्चन में we have given n, but here in this question हमें क्या given है, we have given what, last term, it is the last term not the n, because here is plus, this is first term plus, like this a1 plus a2 plus a3 plus dash 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 plus an, it means 84 is the last term, and simply we will find, here is what is a is equal to 7, a means a1, a2 is equal to, in NCERT उसमें लिखा है 10 half, 10 and half, तो 10 and half means 10.5, 10.5, or we can write 10 and half, here is 10.5 means 10.5, and which is equal to 10 and half, NCERT में 10 and half लिखा है, 10 whole by 1 whole 1 by 2, इन एनसीईआरटी इसकी जगह क्या लिखा हुआ है 10 and half लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे करा देते हैं, देखो अब नाउ दिस इज a1 दिस इज a2, यहाँ से क्या निकलेगा d निकलेगा, व्हाट इज d, a2 माइनस a1, एंड d व्हाट इज a2, a2 इज 10 and half, 10 and half means 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन में 2, a2 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 2 माइनस a1 इज 7, 7 अपॉन में 1, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये जोड़ दिया, 2 इंटू 10 प्लस में 1 अपॉन में 2, दिस इज 20 प्लस 1 अपॉन में 2,
is equal to 21 upon 2. Here is. And now D is equal to taking LCM. LCM is 2. Now what is that here? Think over it. What is that here? This is 21. 2 को 2 से divide. 1 आ गया. 1 को 21 से 21 minus 1 divided by 2. सॉरी 2 divided by 1. 2 को 1 से divide करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. 2 को 7 से 14. तो 21 minus 14 7. 7 upon 2. This is your D. It is D. D आ गया. A आ गया. ये रहा A. तो हमें क्या निकालना है पहले? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट. टू फाइंड हमें क्या निकालना है? N and after and then Sn. पहले क्या निकालेंगे? N. Because we don't know N. बिना N निकाले we can't find out Sn. Means we know this is your An. ये क्या है मेरे पास? An. It is An. तो it mean An is equal to 84. तो we have to apply An is equal to 84. An का फॉर्मूला लगा देंगे. A प्लस n माइनस वन इंटू में D इज इक्वल टू 84 आ जाएगा. A की जगह पुट द वैल्यू ऑफ A. व्हाट इज A? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इज 7. A की वैल्यू क्या है? 7 प्लस ब्रैकेट n. व्हाट इज n? आई डोंट नो. माइनस वन. व्हाट इज D? D यू नो. 7 अपॉन में 2. 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84. Here is 7 plus का इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का. When we transpose it will be negative. n minus 1 into में 7 upon में 2 is equal to 84 minus 7. That mean n minus 1 7 upon में 2 is equal to, this is same, 84 में से 7 we have to subtract. 7 from 80, 7 from 84, this is 77. तो n minus 1 is equal to 77 and cross that will be 2. ऊपर चला जाएगा. ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आएगा. 2 अपॉन में 7. 7 से 7 दिस इज 11. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22. n इज इक्वल टू 23. दिस इज n. अब मेरे I have find n, and after that what we have to find out? Sn. What we have to find out? Sn. हमें Sn निकालना है. Sn we can apply formula. Second formula we apply. Sn is equal to n upon में 2 bracket a plus last term, and it is the an. An means this is L. This is L. This is L. It is L also. It is L. An 84 is equal to L. S n की जगह 23 is equal to 23 upon में 2 bracket. What is A? A is 7. A is 7. 7 plus L. L. What is L? L is last term, which is equal to 84. 84. And now solve it as 23. And now we have to solve. It is 23 upon my 2, and we have to add. And then answer is we have to multiply. And as 23 और 23 multiply 91. 23 को 91 से multiply करेंगे और 2 से divide करेंगे. तो आंसर is 23 और 91 multiply करेंगे तो 3, 27, here is 2, 18. Here is 3, 0, 1, 2. Here is 9, 0, 2093. 2093 upon में 2 and change into decimal form 1046.5. It is your S23. This is the first part of second question, and all question are same like this one. And now we have to move to other part, third part of this question. Question number 2 and third part solution. Again you know it very well. What is this? A1. A1 is equal to minus 5. A1 is equal to minus 5. A1 is equal to minus 5 and A2 is equal to minus 8. This is A1, this is A2, this is A3, and this is AN. And AN is equal to
minus 230. A1, A2. From A1, A2, we find D. D is equal to A2 minus A1. D is equal to A2. What is A2? Minus 8 minus A1 minus 5. A2 minus A1. A2 is minus 8 minus A1 is minus 5. Minus minus plus. So D is equal to minus 8 plus 5 and D is equal to minus 3. D is equal to minus 3. This is the value of D. And An is given to us. A is 5. A is 5. An is minus 230. And then again from here यहाँ से we will find n. An मेरे पास minus 230 and we apply formula of An. We know A plus n minus 1 into D is equal to 230. A plus n minus 1 into D. This is the formula of An. And we apply formula of An. And now put the value of A and D. We will obtain n. What is A? Minus 5 plus n minus 1. What is D? D is minus 3 is equal to 230. Here is minus 230. And now this is 5 minus and that will be transfer. It will be positive. N minus 1 into minus 3 is equal to minus 230 plus 5. And this will be n minus 1 into minus 3 is equal to minus 2 to 5. Here is minus 230. ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का n minus 1 is equal to minus 2 to 5. Here is multiply and when it transfer to the right it will be divide. This minus minus will cut 2 to 5 2 3 3 1 ja 3 3 7 ja 21 3 5 ja 15. So n minus 1 is equal to 75. N is equal to 76. N की वैल्यू 76 आ गई. And what we have to find out? Sn. Sn mean n upon 2. It is better to find out by this formula an. Or we can write also n upon 2 bracket a plus l. Both are same. Both are same. And now what we do? अब आप put करिए value और आंसर निकालिए. S n. What is n? 76 and find the answer. First. First find it. N is 76 upon में 2 bracket. What is A? What is A? A is minus 5. A is minus 5. A is minus 5 plus L is minus 230 and bracket close. Here is 1. This is 38. 38 and this will be 38 bracket minus 5 plus minus minus 230 230 plus minus 5 दोनों minus 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 plus 38 into minus 235 and now we have to multiply 38 multiplying you do yourself minus 8930 it is your answer. This is the second question and part third. And now move to question number third. Question number third, first part. Question number third, first part. In an AP, in an AP, it is given. What is given? Given. It is given to us. What is given to us? A is equal to 5. A is equal to 5. D is equal to 3.
D is equal to 3, AN is equal to 50, and we have to find out what we have to find out, A and SN. And now how we can find out solution? Here is A, it is D, AN. We have to find out A. First, it means we have to apply formula of AN. हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. कैसे लगाएंगे? AN is equal to 50 means we apply formula of AN. A plus N minus 1 into D is equal to 50. यहाँ पर A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देंगे. सॉरी, N की वैल्यू और N की वैल्यू ए की और डी की वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्या है बेटे? ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 3 इज इक्वल टू 50. निकालिए एन की वैल्यू फास्ट. फाइंड एन. ये प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा. n minus 1 into 3 is equal to 50 minus 5. n minus 1 into 3 is equal to बड़ी आसान एक्सरसाइज है देखो. तो n 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड. n minus 1 is equal to 45 अपॉन में 3. दिस विल बी 15. 3 1 जा 3 5 जा. तो n minus 1 is equal to 15. तो n is equal to 15 और ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का प्लस 1. तो n is equal to 16. दिस इज एन. तो निकालेंगे क्या? एस एन. एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला? विच फॉर्मूला इज बेटर? फर्स्ट वन इज ये वाला फॉर्मूला, एक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एंड सेकेंड फॉर्मूला इज एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन. आई थिंक here is second formula. N is given to us 16, we find out. And what is this? A is also given to us 5 and an is given to us. It is better to find out by second formula. और यू कैन फाइंड आउट आल्सो फर्स्ट फॉर्मूला. आप पहले से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो. एस एन, व्हाट इज एन? एन इज 16. एन की जगह क्या आएगा? 16. फिर एन अपॉन 2 मींस 16 अपॉन 2 ब्रैकेट व्हाट इज ए इज 5. ए इज 5. ए क्या है मेरे पास? 5 प्लस ए एन कितना है? 50. इसको सॉल्व करेंगे. 2 1 जा 2 2 8 क्या आएगा? 8 इंटू 55. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो S16 is equal to 8 5 जा 40, 440. This is your answer. This is question number third, first part. And thanks for today. And in next class or video, we will start question number third, second part. And now, thanks.